इसलिए as long as algorithm remains same, whatever you are done, that is also fair. Once you understood BFS, I guess the DFS should be a copy paste algorithm. Take a look at the DFS algorithm, how easy, how simple it is, और बाद में मैं उसका पेपर वर्क करके दिखाता हूँ. It's a DFS. I'm saying that now create a stack. Create a stack. Oh yes, I'm creating a stack. Stack java.util.stack. Yes, it is already there. You can start by pushing it root, and you pop the element. See it carefully. You pop the element. You compare if it is matching. If it is matching, that is good. And if it is not matching, then push its left child and push its right child. And good thing is that algorithm is finished. Please note, algorithm is done. और आपको कुछ भी नहीं करना है. So जो आप लोगों ने BFS में किया है वही आपको DFS में करना है. Instead of queue, it is stack. हाँ, only thing usually लोग एक छोटा सा चेंज करते हैं. People first push the right child and then push the left child. So यहाँ पर एक मैंने change in order किया. So is that change in order is compulsory? Not compulsory, but still this is more common technique. जब लोग बाइनरी सर्च ट्री के साथ DFS इंप्लीमेंट करते हैं तो लोग पहले राइट वाला चाइल्ड पुश करते हैं और बाद में लेफ्ट वाला चाइल्ड पुश करते हैं. दिस इज डन. यू कंटिन्यू फर्दर. यू ट्राई टू कॉल दैट एज वेल. हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं. एंड कॉल करके देखते हैं. लेट अस ट्राई टू सी इफ द एलिमेंट आई कैन फाइंड इट using BFS. Can I also find the same element using DFS? Okay, let me try to find out same element using DFS. Let me run this and you again try to find out, let's say 80, and I found that element using BFS. I found the same element using DFS. So as I said that the algorithm writing is super simple. We will obviously do the paperwork and we will try to understand why it is called as a depth first search. Yeah, I hope algorithm is clear. आपको algorithm कहाँ से शुरुआत करना है? Push the root into the stack, and while stack is not empty, get the topmost element, compare with this, and if it is matching, well and good. If it is not matching, put the right child into the stack and then put the left child into the stack and repeat the process. कोई condition नहीं है. Repeat the process. If the stack is not empty, pop the next element. This is what the DFS algorithm is. Let us do it on paper and try to check it whether it is going well or not. DFS. Let's get started. So algorithm कहाँ से शुरुआत करना है? Put 50 onto the stack. मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से यहाँ पर algorithm लिख लेता हूँ so that it will be in front of you, so that the comparison, what is that? The tracking becomes easy for you. So you begin the algorithm by pushing root onto the stack, and while stack is not empty, while stack is not empty, what is to be done? While stack is not empty, just go ahead, pop one element. So trav is equal to h dot pop. You popped. You check, is it matching? If key is equal to trav's data, if it is matching, I'm returning trav. Okay, that is good. Otherwise, you check whether it has got right child. Trav dot right is not equal to null, then push trav's right onto the stack. Else, obviously I want to check the second one. Else नहीं है. अगर उसका left child भी है, left is also not equal to null, then push left child also onto the stack. That's it. So it's like an algorithm. I have purposefully typed written it once again for you so that you can have the algorithm in front of you, and that should make it easy for you to do the paperwork. Chalo, now algorithm you are able to see it well, and you begin your algorithm from here. You begin your algorithm from here. You can do the paperwork with me. It is कोई complicated algorithm नहीं है. अभी अभी हम लोगों ने BFS किया है, तो on the exactly parallel line DFS चलने वाला है. तो nothing great we are going to do as such. हाँ, कहाँ पर थे हम लोग? हम लोग यहाँ पर थे. And let's begin with. So h dot push root. So you begin by pushing 50 onto the stack. Oh, I push 50 onto the stack. Good. A 50 onto the stack, and then stack is not empty. You pop the element. I pop the element. The 50 is popped.
You see, again हम लोग किसको सर्च कर रहे हैं? We are still searching for 80 only. We are still searching for 80 only. Let's see how all the way it goes. If key is matching, oh, is it matching 80? Sorry, it is not matching 80. तो does it have right child? By the way, हमने इसको पॉप किया ना, हमने इसको पॉप किया. हाँ, does it have right child? Oh, is it having right child? If it is having right child, put it onto the stack. If it is having left child, then put it onto the stack. Okay, ये find out इसका right child कौन है? 90. You put it onto the stack. इसका left child कौन सा है? 30. Put it onto the stack. That's it. It is done. And then repeat the process. Repeat the process. Repeat the process. Again, I'm saying that stack is not empty. Go ahead, pop the next element. Who is the next element? 30. You pop 30. So Trav is equal to 30. You compare. Is it matching? Is it matching? Probably no. It is still not matching. In not matching, what is to be done? Uska right child, put it onto the stack. Uska left child, put it onto the stack. A right child 40, put it onto the stack. Left child 10, put it onto the stack, and you go ahead, you repeat the process. Again you are saying that while stack is not empty, oh sorry, stack is not empty. Stack is not empty, what is to be done? Trav is equal to s dot pop. You pop the next element. On next element I see is 10. Let me pop 10. Let me pop 10 and let me compare. Is it matching? Sorry, I'm searching 80. 80 is not matching with 10. What is to be done? 10 का right child. ये 10 का right child है क्या? हाँ, definitely है. 10's right child is 20. Put it onto the stack. 10 का left child है क्या? Sorry, 10 का left child नहीं है. नहीं है. You go ahead and once again. While stack is not empty. Oh sorry, stack is still not empty. What is next job to be done? Continue. Trav is equal to s dot pop. Trav is equal to s dot pop. You pop the next element. The next element you popped is, let's say, 20. So trav is equal to 20. Is it matching 80? Sorry, this is not matching 80. You continue further. उसका right child है तो stack के ऊपर डालो. उसका left child है तो stack के ऊपर डालो. Good thing is that इसका right और left दोनों नहीं है. You repeat the process. Again stack is not empty. Go ahead, pop the next element. Next element is 40. Next element is 40 and this is over here. Is it matching 80? No, not at all. Does it have right child? No, it doesn't have right child. Does it have left child? No, it doesn't have left child. Again stack is not empty. You pop the next element. Our next element is 90. You popped 90, you popped. And is it matching 80? Sorry, it is not matching 80. It is not matching 80. What is to be done? Its right child, put it onto the stack. Its left child, put it onto the stack. Its right child is 100 that we push on the stack. Left child 70 that also we push onto the stack. And you continue further. And you continue further. What are you saying? Oh, while stack is not empty, you pop the next element. Next element you popped is, let's say, 70. Oh yes, 70 is popped. 70 is popped and you're checking, is it matching 80? No, it is not yet matching 80. Not matching 80. Its right child, put it onto the stack. Its left child, put it onto the stack. Right child is 80. You pushed onto the stack. Left child 60. Yes, you put onto the stack. Okay, that is done. And then you repeat the process. You repeat the process. Stack is still not empty. Pop the next element. Oh, next element, look 60. A 60 is popped. 60 is popped. 60 is popped. It is there. When 60 is popped, you want to check. Is it matching 80? Sorry, it is not matching 80. Does it have right child? No, it doesn't have right child. Neither it has got left child. Go ahead, pop the next element. Next element your popped is 80. Next element your popped is 80. Is it matching 80? Next element you popped. Yes, it is matching 80. If it is matching 80, just return from here. Just return from here. Please see the flow. Please pay attention the order in which it has checked. Orders आपके सामने लिखा हुआ है. You started from 50. You go to the 30. You go to the 10. Then you go to the 20. After 20, you go to the 40. After 40, you go to the 90. From the 90, you go to the 60. And from the 60, you go to the 80.
what you are saying, it is not in order. It is not really the in order. It is like a pre-order. But again, please see it in a different perspective. I want to show in a different perspective why it is referred as depth first search. Why it is referred as depth first search. So यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? We are going through its every branch. हम लोग इसका पहले branches, ये लेफ्ट मोस्ट के सारे branches खत्म हो गए. Then we are going to like this branch. Once this branch is over, then we are going to the next branch. When this branch is over, pay attention, now we are going to this branch. When this branch is over, then we have gone to this branch. And then when this branch is over, probably we would have gone to this branch. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, हम लोग एक 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 डेप्थ को डिस्कवर कर रहे हैं. So we are discovering every possible depth, and that's why this is referred as depth first search. Yes, this output is quite similar to that of pre-order, that is 100% sure. फिर से एक बार, why it is depth first search? You must have seen a depth first search, क्योंकि ये कैसे जा रहा है कि पहले पहला डेप्थ जो है वो पहला डेप्थ आप लोग पूरा डिस्कवर कर रहे हो, यहाँ पर नहीं मिला, देन यू आर गोइंग टू सेकंड डेप्थ, और सेकंड डेप्थ में भी नहीं मिला, देन यू कंटिन्यूड, यू फॉलो द नेक्स्ट डेप्थ. अच्छा यहाँ पर कोई है क्या? अगर है तो आप लोग उसको ढूंढ रहे हो, यहाँ पर भी नहीं मिला, यू कंटिन्यू फर्दर, देन यू गो टू द नेक्स्ट डेप्थ, यू गो टू द नेक्स्ट डेप्थ. सो नेक्स्ट डेप्थ ऑल द वे. और अगर यहाँ पर भी नहीं मिला, देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट डेप्थ. और अगर यहाँ पर भी नहीं मिला, यू आर अगेन कंटिन्यूइंग ऑन टू द नेक्स्ट डेप्थ. एंड दिस वे यू आर गोइंग टू कंप्लीट द होल स्टोरी. एंड दैट्स व्हाई दिस इज नेम्ड एज डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम. इज दिस क्लियर? If it is clear, please go ahead and run it at your end. If you want me to repeat, let me know. I thought that is algorithm exactly same. Pooja is saying that what is the difference between DFS and BFS? What is the difference between DFS and BFS? There is only one difference. एक में हम लोग लेवल बाय लेवल सर्च कर रहे हैं, एक में हम लोग डेप्थ बाय डेप्थ सर्च कर रहे हैं. एक में हम लोग लेवल बाय लेवल सर्च कर रहे हैं और एक में हम लोग डेप्थ बाय डेप्थ सर्च कर रहे हैं. नाउ राजेंद्र का क्वेश्चन है, yes, before 100 we found 80, absolutely correct स्नेहा, correct. राजेंद्र का क्वेश्चन अच्छा है, what should be preferred, BFS or DFS? Rajendra, to be frank, there is no good reason you should prefer BFS over DFS or DFS over BFS, because both are probably with the time complexity of O of n. Now it all depends on your luck and what exactly you want to find out. I'll give you example. I'll give you example. Please try to tune with the example. Sarthak is saying that can't we use Q for the DFS? No, you cannot. That is the main difference. You always see that BFS we always use the Q. As far as the DFS is concerned, we always use the stack. करके देखो सार्थक, आई होप यू कैन ऑलवेज ट्राई इट. पेपर वर्क करके देखो, अगर आपने पेपर वर्क किया तो यू विल रियलाइज दैट विद क्यू यू विल ऑलवेज गो विद द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एंड विद द स्टैक यू विल ऑलवेज गो विद द डेप्थ फर्स्ट सर्च. हाँ लेकिन रुको, मैं आपको क्या पूछ रहा था, मैं एग्जांपल दे रहा था राजेंद्र के लिए, फॉर यू आल्सो. सर बीएफएस कब करना चाहिए, डीएफएस कब करना चाहिए? लेट्स से दैट एक बहुत बड़ी कंपनी है, विजुअलाइज दैट एक बहुत बड़ी कंपनी है, वेयर वी हैव गॉट सम डायरेक्टर, and under the director there are like multiple managers, and under each manager there are like multiple supervisors, and under each supervisor there are multiple, let's say, workers, correct? So this is a kind of a hierarchy in a company. फिर से एक बार, we have got directors on the top, under directors we have got, let's say, managers, under managers we have got like a supervisors, and under supervisors there are workers. अब आपको इस कंपनी में ये जो पूरा हायरार्की है, दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग इट लाइक अ ट्री. अब आपको इस हायरार्की में यू वांट टू फाइंड आउट वन एम्प्लॉय. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट वन एम्प्लॉय. नाउ टेल मी, कैसे सर्च करोगे तो एम्प्लॉय जल्दी मिल जाएगा? टू बी फ्रैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग कैसे भी सर्च करो. आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है कि आप लोग कैसे सर्च कर रहे हो? Do you really believe that? Whether you search it like a DFS, whether you search it BFS, it depends.
फाइनली अभी आपके नसीब के ऊपर डिपेंड करता है. हैव अ लुक एट दिस. फॉर एग्जांपल अगर वो पहले डेप्थ में मिलने वाला है, लेट्स से अगर वो आपके पहले मैनेजर के पहले सुपरवाइजर के अंडर काम करने वाला पहला वर्कर है, पहले मैनेजर के पहले मैनेजर के पहले सुपरवाइजर के अंदर काम करने वाला पहला वर्कर है, तो देर आर लाइकली चांसेस दैट यू विल फाइंड इट अर्ली. या फिर एज अपोज टू दैट अगर वो आपका पहला पहला या फिर लेट से दूसरा तीसरा मैनेजर है, अगर आपको दूसरा तीसरा मैनेजर है, अगर आप लेवल वाइज जा रहे हो तो लेवल वाइज जा रहे हो, अगर वो मैनेजर है देर आर लाइकली चांसेस दैट यू कैन फाइंड हिम अर्ली. बट अगर आपको पता नहीं है कि सर वो मैनेजर है या फिर वो वर्कर है, तो यहां पर आपके हाथ में कोई ज्यादा चॉइस ही नहीं है. सो यू कैन जस्ट ट्राई इट आइदर वे, या तो यहां से या तो यहां से. फाइनली डिसीजन आपको लेना है कि आपको एक मैनेजर और उसके अंडर के सारे पहले खत्म करके बाद में दूसरे मैनेजर के ऊपर जाना है, या फिर आपको लेवल वाइज जाना है. लेवल वाइज मतलब पहले डायरेक्टर का नाम ढूंढो, नहीं तो फिर सारे मैनेजर्स को ढूंढो, अगर मैनेजर्स नहीं तो फिर उसके नीचे के सारे सुपरवाइजर्स को ढूंढो, और अगर वो भी नहीं तो उसके नीचे के सारे वर्कर्स को ढूंढो. इट डिपेंड्स कि आपको कैसे सर्च करना है. एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न, इट डिपेंड्स ऑन योर लक व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू फाइंड. आई होप राजेंद्र यू गॉट माई पॉइंट. हैव यू पीपल डन दैट? दो तीन लोगों ने सिर्फ डन क्या किया, हो गया वर्क. ओके, दैट इज गुड. So this algorithm is a depth first search algorithm. Now, let it be the breadth first search algorithm. Let it be the depth first search algorithm. I got a question. I got a question. ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च करने के लिए क्या ये ट्री सॉर्टेड ऑर्डर में होना जरूरी है? ब्रेथ फर्स्ट सर्च या डेप्थ फर्स्ट सर्च करने के लिए क्या आपका ट्री सॉर्टेड ऑर्डर में होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं. अब यहाँ पर कौन सा लेफ्ट साइड का छोटा है, राइट साइड का ग्रेटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी आप लोग लेस देन और ग्रेटर देन चेक ही नहीं कर रहे हो. what you are doing is that you are just going या तो लेवल वाइज और you are going डेप्थ वाइज. इट इज लाइक अप टू यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू. जब आपका ट्री सॉर्टेड नहीं है, जब आपका ट्री सॉर्टेड नहीं है, एट दैट टाइम यू वांट टू प्रिफर आइदर बीएफएस और डीएफएस, आइदर बीएफएस और डीएफएस. और आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. सपोज दैट मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स का ट्री बनाया, मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का बाइनरी सर्च ट्री बनाया, लेकिन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का जो मैंने बाइनरी सर्च ट्री बनाया है, वो बाइनरी सर्च ट्री मैंने रोल नंबर के हिसाब से बनाया. लिसन केयरफुली. मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का बाइनरी सर्च ट्री जो बनाया है, वो मैंने कैसे बनाया? रोल नंबर के हिसाब से बनाया. मतलब स्मॉलर रोल नंबर टू द लेफ्ट साइड एंड द ग्रेटर रोल नंबर टू द राइट साइड. तो ऐसे करके मैंने बनाया. लेकिन इन फ्यूचर आई सेड दैट कि मुझको स्टूडेंट को सर्च करना है बाय हिज नेम. अगर मुझको नेम से सर्च करना है, तो इवन दो इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री, now that binary search tree is arranged by the roll number. Since it is arranged by the roll number, नेम से सर्च करने के लिए वैसे भी उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है. So at that time either I need to go with the BFS or I need to go with the DFS depending on what you find good. मैं आपको बता रहा था BFS और DFS कहां पर यूज करने चाहिए. लेकिन लेकिन सर अगर मुझको पता है मेरा ट्री बाइनरी सर्च ट्री है, और जिस की के ऊपर मैंने लेफ्ट या राइट डिसाइड किया है, उसी की के ऊपर से अगर मुझको सर्च करना है, डोंट यू थिंक दैट दिस वुड बी अ बेटर चॉइस इफ इंस्टेड ऑफ सर्चिंग इट इन अ BFS DFS where I'm going to get a time complexity of O of n, a BFS DFS where I'm going to get the time complexity of O of n, can I find it in some better way? Or the better way, I'm saying that why don't you go for actually binary search itself. And I guess that अगर आपको 80 ढूंढना है, I guess searching 80 should be very easy अगर आप लोग बाइनरी सर्च मैकेनिज्म में जाते हो. सर कैसे बाइनरी सर्च कैसे? दिस इज वेरी सिंपल. इज इट मैचिंग 80? मैं कह रहा हूँ कि पहले मेरा जो ट्री है, ट्री मेरा बाइनरी सर्च ट्री है. अगर मेरा सर्च ट्री अगर बाइनरी सर्च ट्री है, go ahead, tell me in this particular case, is it matching 80? No, it is not matching 80. But what is to be done? ये बाइनरी सर्च ट्री है, तो राइट साइड वाले ग्रेटर है, लेफ्ट साइड वाले स्मॉलर है. अगर मुझको पता है अगर ये ग्रेटर एलिमेंट है, जस्ट गो टू द राइट एंड चेक इज इट मैचिंग 80? No, it is not matching 80, but 80 is smaller. 80 is smaller. 80 is smaller. Yes, you go to the left.
Oh, is it matching 80? No, sorry, this is not matching 80, but 80 is greater. But 80 is greater than 70. Just go ahead, go to the right. Is it matching? Yes, it is matching. And you find that is with this mechanism for this tree, कोई भी element आपको search करना होगा, it will not take more than 4 iterations. It will not take more than 4 iterations. I hope you agree. इट विल नॉट टेक मोर देन 4 इटरेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोग कहीं पर भी जाओ, कैसे भी सर्च करो, ज्यादा से ज्यादा 4 इटरेशन में आप लोग लास्ट लेवल तक पहुंचने वाले हो. तो जितनी बड़ी आपकी हाइट है, सी लेट अंडरस्टैंड दैट इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट यू विल गेट विल बी सिंपली ओ ऑफ एच. ओ ऑफ एच, मैं एन नहीं कह रहा हूं, मैं एच कह रहा हूं, वेयर एच इज काइंड ऑफ हाइट. तो जितनी ज्यादा हाइट होगी, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा. जितनी कम हाइट होगी उतना कम टाइम लगेगा. आई एम सेइंग दैट द मैक्सिमम इटरेशंस विल बी लाइक दिस. इफ इट इज नॉट क्लियर, मैं और एक आध एग्जांपल लेता हूं. लेट्स से दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एलिमेंट 20. You are trying to find out element 20. Let us go ahead, find out 20. You want to find out 20? Let us go ahead. I'm repeating, don't worry Akshay. 20 पहले हम लोग रिपीट करते हैं, पेपर वर्क करते हैं. इफ पेपर वर्क इज क्लियर लेट मी नो, फिर हम लोग उसका कोड लिखेंगे. 20. तो ट्रैव इज इक्वल टू रूट. Is it matching 20? No, it is not matching 20. If it is not matching 20, but I understand that 20 is smaller than 50, what is to be done? Oh, go to the left. Is it matching 20? No, still not. But 20 is again smaller, so I should again go to the left. Is it matching 20? Oh, this is also not matching 20. But at this time, 20 is greater. If 20 is greater, all I need to do is that just go to the right. Oh, and I found that yes, 20 is available. 20 is available. So one iteration, second, third, fourth, maximum 4 iteration, I'm able to find out the element. Oh, it is so simple. If it is still not clear, let me just go ahead and let me try to find out one more element. And the element that I'm trying to find out is 65. The element that I'm trying to find out is 65, and I find that इस ट्री में 65 है ही नहीं. इस ट्री में 65 है ही नहीं. ओके, दैट इज स्टिल फाइन. स्टिल नहीं है, फिर भी हम लोग इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं. पे अटेंशन. आई वांट टू फाइंड आउट 65. आई वांट टू फाइंड आउट 65. स्टार्ट. मैं तीसरी बार पेपर वर्क कर रहा हूं. स्टिल नॉट क्लियर, प्लीज डू आस्क. स्टार्ट. ट्रैव इज इक्वल टू रूट. आई बिगिन फ्रॉम हेयर. इज इट 65? Not really. 50, it is not 65. But 65 is greater. 65 is greater. Go ahead, go to the right. And now it is 90. Is it 65? Not really. But 65 is less than 90. 65 is less than 90. Go to the left. Is it 65? Is it 65? Oh, not really. This is not 65. But 65 is smaller. 65 is smaller. You again go to the left. Is it 65? Oh, this is also not 65. But 65 is greater. 65 is greater. You go to the right. And into the right. And into the right. And into the right. Oh, you reach to the null. What does it mean? What does it mean? It simply means that the element is not found. So again you find that maximum 4 iterations that we followed, nothing else. Okay, that is great. करेक्ट. तो अगर हमको, आई गेस मैंने 3 बार रिपीट किया है, एक जिसने रिपीट करने के लिए बोला था. आई होप यू अंडरस्टूड इट. स्टिल नॉट क्लियर, प्लीज लेट मी नो. सो हाउ डू यू बिगिन विथ योर एल्गोरिथम? You begin with your algorithm simply by saying trav is equal to root, and you start comparing. If key is equal to trav's data. If key is equal to trav's data, what is to be done? If key is equal to trav's data, what is to be done? A element is found. If element is found, simply go ahead and simply say return trav. Okay, that is good. But if element is not found, इसका मतलब क्या है? There are only two possibilities. या तो जो आप लोग सर्च कर रहे हो, the element that you are searching,
या तो स्मॉलर है या तो ग्रेटर है, दोनों में से कुछ है। इक्वल होता तो यही से रिटर्न हो जाता, या तो स्मॉलर है या तो ग्रेटर है। इफ आई से दैट इफ की इज लेस देन ट्रैव्स डेटा, if key is less than Travis data, what is the meaning of this? ओ स्मॉलर है तो क्या करो, अगर स्मॉलर है क्या करो, तो सिंपली यू से दैट ट्रैव इज इक्वल टू ट्रैव्स लेफ्ट। अदरवाइज अदरवाइज इट इज वेरी क्लियर वो ग्रेटर होगा, और अगर वो ग्रेटर होगा तो क्या करो, नथिंग मच, सिंपली से ट्रैव ट्रैव इज इक्वल टू ट्रैव्स राइट, trav is equal to trav's right. Just keep on and then repeat the check once again, no? And then repeat the check once again. और ये कब तक आपको रिपीट करना है, आपको कब तक रिपीट करना है? You people understand that you want to keep on repeating it until trav is not null. But if trav is null, if trav is null, what is the meaning of this? It only means that the element is not found. And if the element is not found, what you want to return? If element is not found, what do you want to return? I simply want to return null. I simply want to return null, and this is something logic that I was planning to build. So that is something in front of you. Is it clear to everyone? I guess ये सबसे आसान वाला लॉजिक है. That is what the binary search purpose is. तो जो हम लोग इसमें कर रहे थे, किसमें, अगर आपको याद होगा हमने एरे में बाइनरी सर्च किया था, जो हमने एरे में बाइनरी सर्च किया था वही बाइनरी सर्च यहाँ पर भी है. कंसेप्चुअली इट स्टिल सिमिलर, लेकिन वहां पर वो एरे में था, अब यहाँ पर वो ट्री में. वहां पर भी हम लोग वही कह रहे थे, फाइंड आउट द मिडल एलिमेंट, इफ इट इज मैचिंग देन रिटर्न, इफ इट इज नॉट फोकस ऑन द लेफ्ट पार्टीशन, अदरवाइज फोकस ऑन द राइट पार्टीशन. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि गेट द ट्रैव एलिमेंट, इफ इट इज मैचिंग गुड रिटर्न इट, इफ नॉट अप्लाई ऑन टू द लेफ्ट सब ट्री एंड अप्लाई ऑन टू द राइट सब ट्री. दैट्स इट, and we are repeating the same story again and again, nothing else. Okay, you go ahead and you write one more function, public node. By the way, जो लोग मुझको response दे रहे हैं, that they are understanding, I'm following their response, I'm following their response. If you are not getting, please respond accordingly. Like a binary search, we are going with like an integer key. Okay, that is good. And let's find out what is the logic. Node trav is equal to root, and if key is equal to trav's data, then simply return trav. All right, but if not, there are two possibilities: either key is less than trav's data, or otherwise it's pretty simple, the key will be greater than trav's data. It will be greater than trav's data. All right, so if it is less than trav's data, I'm simply saying that trav is equal to trav's left. Let us go to the left and follow it. Otherwise, trav is equal to trav's right, and again follow this. Just put it in a kind of a loop while trav is not equal to null. Keep on repeating a loop, and if at all you reach to the null, it only means that the element is not available. Just come out of from there. Done. So will this work? Yes, it should work. It will work, nahi, it should work. Let me go ahead and let me check it. Let me compare it over here. और फिर से एक बार हम लोग वही एल्गोरिदम फिर से एक बार लिख रहे हैं. अब हम लोग डीएफएस से नहीं कर रहे, नाउ वी आर ट्राइंग टू डू इट with binary search, and this is nothing but my binary search. This is not breadth first search, this is a binary search. And let us see if it is working. Run as this. Oh, and I'm trying to find out the element 80, and I'm able to search it with the binary search as well. Oh, you go ahead, you try to search the element, let's say 50. Oh yes, you are able to find out 50 as well. No one is stopping you. Or you want to find out some other element. Let's say, for example, I'm trying to find out element, let's say 100. And yes, you are able to find out 100 as well. So no problem. Go ahead, try it, run it, check it if it is working. Let me know if you're facing issues, not understanding anything. Go ahead.
Are we adding the numbers in the same order purposefully? Not really. You may try it in different order as well, Jibran. See, जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, जो डायग्राम मैंने स्लाइड के ऊपर बनाया है, जो डायग्राम मैंने स्लाइड के ऊपर बनाया है, आई वांट कि ये डायग्राम सही से आए, और ये डायग्राम सही से आए, इसलिए इसको इस ऑर्डर में मैंने ऐड किया है. सो पर्पस वाज दैट द डायग्राम शुड मैच. Otherwise, you try it with some different tree, you draw a new diagram, and as you draw the new diagram, the algorithms will still work. I hope, Jibran, that is fine. Yeah, good. Binary search. And what is the time complexity? What is the time complexity? The time complexity over here, it is not O of log n, it is O of h. The time complexity over here is O of h. हाँ, अगर आप लोग ट्री ऐसा बना रहे हो, listen carefully, अगर आप लोग ट्री ऐसा बना रहे हो where height is proportional to log n, अगर आप लोग ट्री ऐसा बना रहे हो where height is proportional to log n, in that case you can say that it is O of log n, O of log n. But it depends कि आप लोगों ने ट्री कैसे बनाया, आप लोगों ने ट्री कैसे बनाया, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होगी. लेट मी फिनिश विद दिस बेसिक वन. बाद में हम लोग कुछ ट्रीज के टाइप भी देखेंगे, काइंड ऑफ स्क्यूड बाइनरी ट्री और काइंड ऑफ बैलेंस बाइनरी ट्री. तो जब हम लोग वो वाले टाइप देखेंगे, एट दैट टाइम वी कैन कंपेयर बेटर, आई गेस यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड इट. बट अभी के लिए ये समझो, जितना हाइट होगा उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन चलने वाले. दैट इज प्रीटी क्लियर एंड एविडेंट फ्रॉम दिस कोड. बाय द वे, ये जो एल्गोरिथम हमने लिखा है, ये एल्गोरिथम हमने कैसे लिखा? Using recursion or without recursion? Right now, this algorithm is written without recursion. The question is, can you do it using recursion? Is it possible to write it using recursion? Is this algorithm is possible to write using recursion? Yes, and that is homework for you. That is homework for you. Algorithm मैं आपको बता रहा हूँ, it is very easy algorithm. All you need to do is that you are trying to find the element. If it is matching, it is okay. If it is not matching, if it is smaller, then apply to the left subtree, and then otherwise apply to the right subtree. Binary search algorithm of array, binary search algorithm of array हम लोगों ने बनाया था using recursion as well as without recursion. I do recommend go back, keep it for your reference, and you just convert this block code for the recursive. And recursive, to be frank, ज़्यादा आसान हो जाएगा. Apply to the left subtree. So it will be something like this. The basic code will be still similar. Apply to the left subtree, there will be a recursive call, and apply to the right subtree, there will be a recursive call. लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी इन दैट केस. आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाना पड़ेगा. लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाना पड़ेगा. सो दैट विल बी ओवरऑल लॉजिक. यहां पर आपका एक ट्रैव डॉट लेफ्ट के लिए रिकर्सिव कॉल जाएगा और एक ट्रैव डॉट राइट के लिए रिकर्सिव कॉल जाएगा. मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं सो दैट इफ यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ यू शुड नॉट फाइंड इट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. करके देखो. इफ यू कुड नॉट डू इट, लेट मी नो टुमारो मॉर्निंग, वी विल रेक्टिफाई दैट. इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, यू विल बी एबल टू डू इट, आई एम वेरी श्योर. But now I want to go one more step ahead. I want to go one more step ahead, and I want to do one minor change in this algorithm. Minor change nahi, minor enhancement in this algorithm. What I'm looking for is that, listen carefully. What I'm looking for is that I'm looking for one more extra thing. I want not only the binary search. Listen carefully. I'm looking for, मुझको सिर्फ binary search करके node नहीं चाहिए. I'm looking for a requirement where binary search with parent. What I'm saying? मुझको दो चीजें चाहिए. एक तो मुझको नोड भी मिलना चाहिए और नोड के साथ साथ मुझको उसका पेरेंट भी मिलना चाहिए. मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं. My requirement is that I want a node, and along with the node I also want parent of that node. फिर से एक बार, I'm looking for a node, and along with the node I'm also looking for the parent of that node. And the question is how I can do that. How I can do that?
So if it is not clear, don't worry, ये basic binary search मैं आपके लिए रखता हूँ. I'll copy paste this. I'll copy paste this and I will paste it over here once again. Check this. What I'm trying to tell you is that take a look at this. मुझको क्या चाहिए? If I'm able to find out this element, I'm able to find out this element. 80 तो मुझको मिल ही रहा है. I'm not only worried about 80. I want up along with 80. I'm also looking for its parent. I'm also looking for its parent. तो मुझको इस फंक्शन से दो आउटपुट चाहिए. सर क्यों चाहिए ये आपको थोड़ी देर के बाद में पता चल जाएगा क्यों चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए समझो कि मुझको ये रिक्वायरमेंट है. आई एम लुकिंग फॉर टू आउटपुट फ्रॉम द फंक्शन. वन आउटपुट द पॉइंटर ऑफ द नोड and the second output the parent of that pointer of the node, and second output the parent of that pointer. Obviously हाँ, if you ask me about root, सर अगर मान लो हम लोग रूट ही सर्च कर रहे हो, तो अगर हम लोग रूट ही सर्च कर रहे हो तो trap will point to this and obviously parent will point to the null. A parent should point to the null. I'm saying that I'm looking for the node pointers. I'm looking for node pointers, not the values. I'm looking for the node pointers. So मुझको इस नोड का पॉइंटर मिल रहा है 50, तो इसका पेरेंट मुझको नल चाहिए. लेट्स से अगर मुझको 40 सर्च करना है, 40 सर्च करना है तो ट्रैव ने मुझको 40 आना चाहिए, लेकिन पेरेंट मुझको और एक पॉइंटर चाहिए एंड दैट पेरेंट पॉइंटर आई शुड बी हैविंग लेट्स से 30. इज द रिक्वायरमेंट इज क्लियर? कैसे करना है कोड में बताता हूं, आप चिंता मत करो. और जिन जिन लोगों ने वो डबल पॉइंटर अप्रोच वाले कोड किए थे, किसमें डबल पॉइंटर अप्रोच वाले कोड किए थे? लिंक लिस्ट के अंदर. ये लिंक लिस्ट के अंदर हमने डबल पॉइंटर अप्रोच वाले कोड किए थे कि वी आर आइदर गोइंग टू द लेफ्ट, वी आर गोइंग टू द राइट एंड काइंड ऑफ स्टफ. तो यस, पोजीशन -1 ट्रैवर्स करने के लिए एब्सोल्युटली वो वाले जो कोड हम लोगों ने किए थे, अगर आपने वो कोड देखे, समथिंग सिमिलर ट्रिक वी कैन अप्लाई ओवर हियर. सो व्हाट इज दैट? लेट अस सी. Let us see. Let's say that again I'm going ahead and I want to find out element 60. ये मेरे को 60 सर्च करना है. ओके, आपको 60 सर्च करना है. Ashraf is saying that repeat the requirement once again. रुको, repeat the requirement once again. My requirement is that whenever I'm finding any element, मुझको इस कोड में से दो आउटपुट चाहिए. मुझको जो नोड सर्च करना है मुझको वो तो मिलना चाहिए, along with that उस नोड का जो पेरेंट है वो पेरेंट भी मिलना चाहिए. मुझको नोड भी मिलना चाहिए और along with that नोड उसका जो पेरेंट है वो भी मिलना चाहिए. दिस इज माय रिक्वायर. हाँ, यस. सो यू वांट द पेरेंट पॉइंटर रनिंग बिहाइंड माय मेन ट्रैव पॉइंटर. आई होप अशरफ नाउ इट इज फाइन. लेट अस कंटिन्यू फर्दर. तो सर अब कैसे शुरू करेंगे? अगेन बेसिक लॉजिक स्टिल रिमेन सेम. हमें या तो लेफ्ट में जाना है या तो राइट में जाना है. सो इनिशियली वी स्टार्ट विथ parent is equal to null, parent is equal to null and trav is equal to root. Parent is equal to null and trav is equal to root. Okay, let's get started. हमें 60 सर्च करना है. ये 60 सर्च करना है. Is it matching 60? Sorry, it is not matching 60. But if it is not matching 60, 60 is greater. If 60 is greater, what to do? 60 is greater. Okay, go to the right. But wait. Before you go to the right, listen, before you go to the right, make parent is equal to trav and then trav is equal to trav's right. First parent is equal to trav and then trav is equal to trav's right. Okay, that is good. Again you compare. Is it matching 60? Sorry, this is not matching 60. Is 60 smaller? Yes, 60 is smaller. So I want to go to the left. I want to go to the left. But before going to the left, make parent is equal to trav and then trav is equal to trav's left. Okay, that is great. And you continue further. Is it matching 60? Sorry, is this matching 60? Sorry, this is not matching 60. But 60 is smaller. 60 is smaller. So you want to go to the left. But before you go to the left, I said first make parent is equal to trav and then trav is equal to trav's left. Is it matching 60? Oh yes, it is matching 60. And when it is matching 60, I'm getting both. What I'm getting? I'm getting the trav pointer. At the same time, I'm getting the parent pointer. Oh, that is great. Out not very difficult. I'll repeat it once again.
And please pay attention because your basic code still going to remain same. हमें कोई बड़ा तीर नहीं मारना है. Please pay attention. Starting with ये हमको 80 सर्च करना है और 80 का पेरेंट सर्च करना है. आई एम रिपीटिंग ट्वाइस. प्लीज पे अटेंशन. You start with trav is equal to root. Is it matching 80? No, it is not matching 80. 80 is greater. It is greater, so I need to go to the right. But before you go to the right, make parent is equal to trav and then go to the right. Is it matching 80? No, it is not matching 80. But 80 is smaller. 80 is smaller, so I want to go to the left. But before you go to the left, make parent is equal to trav and then trav is equal to trav's left. Okay, that is good. Is it matching? Is it matching 80? Or not really? Not really. But 80 is greater. Greater means I need to go to the right. I need to go to the right. Okay, you need to go to the right. So first take parent is equal to trav and then you go to the right. Is it matching 80? Oh yes, this is matching 80. You are matching 80. So you also got the parent. दोनों आपके हाथ में आ गए. That is what all my requirement was. Is this clear? So what is the basic logic? A logic is pretty simple. Before you go to the left, before you go to the right, have a look at this. Before you go to the left or before you go to the right, all efforts that you need to take is that simply ensure that the parent is equal to trav. तो पहले just add one extra line saying that parent, yes, is a two pointer logic. यही लॉजिक तो हम लोग इससे पहले यूज कर रहे थे. इसलिए मैंने आपको बताया था कि सिंगली लिंक लिस्ट के कोड पेपर वर्क अच्छे से करो. सो पीपल हु हैव डन अ पेपर वर्क ओवर देयर, दे फाइंड इट, अच्छा सर ये थोड़ा सा उसके जैसा ही है, थोड़ा सा नहीं, ये काफी हद तक उसके जैसा ही है. इट इज सिमिलर सिमिलर वन. करेक्ट. आपको अगर मेरा मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर का याद होगा तो उस मैसेज में मैंने कुछ लिखा था कि लिंक लिस्ट इज लाइक फाउंडेशन फॉर योर रेस्ट ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर. सो इट इज नॉट लाइक आपको लिंक लिस्ट कितना आता है, आपने कैसे किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू डू द पेपर वर्क, यू गेट द आइडिया, अच्छा सर ये ऐसे ऐसे चल रहा है, एंड देन यू कैन लर्न इन द सेम मोमेंटम. अगर आप लोग कह नहीं सर मेरे को लिंक लिस्ट आता है, मेरे को ट्री पढ़ना है, एंड देन यू डायरेक्टली जंप ऑन योर पेपर वर्क ऑन अ ट्री, you find it very heavy, sir tree is very difficult, and then you say नहीं sir tree आप sir fast पढ़ा रहे हो. मैं fast नहीं पढ़ा रहा हूँ. If people who have done the practical, people who have done the paperwork of the linked list very well, so they are, अच्छा sir ये तो बहुत ही simple है, exactly same to same हम लोग कर रहे हैं, you automatically gain a confidence. All right, anyway चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. So the basic logic is over here. बट रुको रुको रुको, मुझको पहले ये बता दो, पहले बता दो, initially initially what is parent? Initially what is parent? Initially the parent is equal to null. Okay, that is good. But wait, और एक और चीज, if the element is not found, if the element is not found, so you are returning null. Obviously in this case the parent will be also null. I hope you agree. In this case even parent will be also null, क्योंकि अगर नोड नहीं मिला तो parent लेके क्या उसका अचार डालना है. Correct. So you want a node as well as its parent. It is very simple. लेकिन अब जावा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन, लिसन, क्वेश्चन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन. अब सिंटैक्टिकल क्वेश्चन है. सिंटैक्टिकल क्वेश्चन ये है, हाउ डू आई रिटर्न टू थिंग्स फ्रॉम द फंक्शन. मेरे को नोड का पॉइंटर भी रिटर्न करना है और मेरे को पेरेंट का पॉइंटर भी रिटर्न करना है. ओ नाउ दिस इज अ चैलेंजिंग. अब मेरे को एक वैल्यू रिटर्न करनी होती तो बात अलग था. अगर मैं कहीं पर जावा, अगर मैं कहीं पर इसमें था, क्या कहते हैं हम लोग उसको, सी प्लस प्लस में होता तो शायद मैं आउट पैरामीटर पॉइंटर्स भी यूज कर सकता था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब पॉइंटर मेरा चॉइस नहीं है. तो अभी क्या ऑप्शन है, अब हम लोग, यस, हम लोग एरे रिटर्न कर सकते हैं. तो एरे कितने का, एरे ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, array of two elements. One element will be trav pointer and one element will be the parent. Correct? One element will be trav and second element will be parent. So what all I will do is that, what I will do is that instead of returning one pointer, see it carefully, I will prefer creating an array, and from that array I will return two things. I will return trav as well as I will return the parent. I will return trav as well as I will return parent.
And on the parallel line, while returning this, यहां पर तो आपको दोनों नहीं मिल रहा है, ना तो नोड मिल रहा है, ना तो ये मिल रहा है, पैरेंट मिल रहा है. So let me return both. So error of zero, the node that I want to search, and the error of one, I'm trying it like a parent. So will it do? Yes, absolutely it will do. So it's the two element array that I'm doing. मैं purposefully पिछला कोड मैंने आपके लिए रखा हुआ है, ये कोड मैंने वैसे रखा हुआ है, और जो नया कोड है उसके अंदर जो नए चेंजेस है मैंने अलग कलर से लिखे हुए हैं, so that you can quickly understand what are the syntactical changes that you need to do it. So will it work? Will it work? वो करके देखते हैं. Will it work? Will it work? Will it work? Let me go ahead. Let me go ahead. I'm saying that I want to return an array. Okay, that is good. What I'm saying, in this particular case, you need one more pointer called a parent pointer. You make it equal to null. And if it is matching, you want to return two things. You want to return an array with trav and with parent. Okay, that is good. And if nothing is matching, so I want to return both null null. Na to node mila, na to parent mila. But every time before you go to the left, before you go to the right, before you go to the left, before you go to the right, you just ensure that parent is equal to trav. A parent is equal to trav. That's it, and your code is completed. सर ये कोड सही चलता है, चला के देखो. Who has stopped you? Go ahead. It is not only binary search that you want to try it. Now I want to take it into the array. I want to collect the output in an array. Let me collect the output in an array. Node, like say ARR, and binary search with parent. I'm passing the key to be search. Passing a key to be search. If temp is equal to null, तो सवाल ही पैदा नहीं होता. There is no element found. But if the element is available, where do we find the element? रुको जरा. If error of 0 is equal to null, error of 0 is equal to null, then it is not found. But if it is found, I can simply get its data plus with parent, and if you want to get the parents data as well, you can say error of 1 dot get data. Error of data. Please note that this may not work well with the root, क्योंकि रूट को पेरेंट नहीं होता है. सो आप लोग चाहो तो एक और एल्स बीच में लगा सकते हो. इफ इट इज लाइक व्हाट इज दैट, उसका पेरेंट नहीं है तो आप लोग वो भी लगा सकते हो. इट इज अप टू यू. करेक्ट. सो आई जस्ट गो अहेड, आई चेक इट द सेकंड केस एज वेल. इफ error of 1 is equal to null, I'll write it over here. Error of 1 is equal to null means what is that? Root node found. It is a root node found. Let me write it over here. Simply saying that with parent null, with the parent null, and otherwise I'm finding what is that? Node found with parent. All right, let us try it. Diagram आपके सामने है. Hopefully diagram आपके सामने है. I have to search 80. Try to search 80. Yes, I found 80 with parent 70. Oh, that is great. You continue further. I want to search, let's say 40. You want to search 40? 40 with parent 30. Yes, 40 with parent 30. Okay, that is going good. You try to find out one more element. You try to find out element, let's say 10. 10 and 10 ka parent is 30. You check. 10 I am finding, and 10 ka parent is 30. Okay, that is also going good. Wait for a minute. Let us repeat it once again. Let me find out 50. If 50 is the root, it is saying that the found 50, but at that case the parent is null parent. A 50 is a root का कोई parent नहीं होता. That is common sense. And finally the last one, let me try to find out 200, which doesn't exist at all. Is simply saying that it is not found by any of the mechanism. Please go ahead, try it. कोड में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए हम लोगों ने. पिछला कोड कॉपी पेस्ट किया हुआ है. सिर्फ एक लाइन यहां पर ऐड किया है, पेरेंट इज इक्वल टू नल. दूसरा लाइन यहां पर ऐड किया है, पेरेंट इज इक्वल टू ट्रैव. एंड एट द एंड रिटर्न करते वक्त हम लोगों ने ट्रैव और पेरेंट इसका एरे रिटर्न किया है.
आई एम वेरी श्योर आपके दिमाग में ये जरूर क्वेश्चन रहेगा, सर ये टाइम पास हम लोग क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी वांट टू रिटर्न नोड एज वेल एज पेरेंट, बट दैट इज व्हाट रिक्वायरमेंट of our next algorithm, that is deleting a node. So I was just trying to prepare you for deleting a node. I was just trying to prepare you for the deleting a node. So you people go ahead, do it. You are facing any problem?